Question number 5 of the topic kinematics. A particle starts from rest at a point A and travels in a straight line until it reaches point B. The velocity of the particle t seconds later after leaving A is v, where v is equals to, we're given an equation of v in terms of t. Given that the velocity of the particle when it reaches B is 0, so when it starts from rest, and when it reaches B, it also comes to rest. Find the time taken for the particle to travel from A to B. Okay. So the velocity is given equation for velocity, which is 0.009 t square minus 0.0001 t cube. We have to find the value of t as it reaches to B. So time to travel from A to B. And we know that at A, velocity is 0, and at B, velocity is 0 as well. So because the velocity is 0 at B, so we equate the velocity to 0 at B. At B, the velocity is 0. So let's substitute 0 here and then get the value of t. I'm going to take t square common. So 0.0009 0.0001 t brackets. T square equals 0, or 0.009 minus 0.0001 t is equals to 0. From here we get t is equals to 0. This is the time at A, because at A, V was also 0. And here get the value of t, 0.009 equals 0.0001 t, and then divide 0.0001 with 0.009. So this gives 90. Yeah, t equals 90 seconds. So that's the time at B as the particle reaches B. Okay. Next is the excuse me, the distance AB. Okay. So we have the formula for the velocity. Now we're going to get distance from here. So we know that to get S, we have to, which is the distance, we have to integrate the velocity. So let's start that. S is actually the displacement, or it's sometimes represented as X as well. So integrate 0.009 t square minus 0.0001 t cube dt. Okay. And we have to find distance from A to B. We also know the time from A to B. So you can also enter the limits of time, 0 to 90. So now you won't have to find C later. You will directly get the distance. Okay. So we get 0.009 t cube upon 3 minus 0.0001 t power 4 upon 4, and the limits are 90 and 0. Okay, so we have 0.003 t cube minus, this would be a small decimal number, 0.001 divided by 4 is 2 into 10 power minus 5, 2.5
into 10 power minus 5 t power 4. And now you substitute t as 90 and then t as 0 and subtract the results. When you substitute that, you get, for 90, you get 546.75. And for 0, you just get 0. So the distance between A to B is 547 meters in three significant figures. Part 3. The maximum velocity of this particle. Okay. Maximum velocity is when the dv over dt is equals to 0. Because if you're plotting velocity against time, and let's say the graph looks like this, then this is where the velocity is maximum. And if you draw a tangent at this point, it will have a gradient of 0. That's why we say that at the maximum velocity, dv upon dt is going to be 0. dv over dt is actually the acceleration. Okay. Now let's derivate the velocities and equate it to 0. So v is again 0.009 t square minus 0.0001 t cube. So dv upon dt will be 0.2 comes down. So we get 0.018 t minus 3 comes down, 0.0003 t square, and equate it to 0. Now take t common, 0.018 minus 0.0003 t square is equals to 0. So t is equals to 0, or 0.018 is equals to 0.0003 t square. So t square will be equals to 0.018 divided by 0.0003, which gives us 60. So time is equals to 60. So I've made a mistake over here. This is just t, not t square. This is t. So t comes out to be 60 seconds. So this means that when time is 60 seconds, the velocity is at its maximum. So you have to find that maximum velocity. So in the equation of v, replace t with 60. So v is equals to 0.009 60 square minus 0.0001 times 60 cube, which gives 10.8 meters per second. कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो अभी.
नहीं मिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Azhar and Alia, are you here? Yes, ma'am. यस मैम। Question number 6. A particle P starts from rest at O and travels in a straight line. Its velocity v meters per second at a time t is given by. अब two equations given है. V की equation ये है between time 0 to 3 and it has another equation for time greater than 3. Find the distance traveled by P in the first 3 seconds. So if they're talking about the first 3 seconds, that means you have to look at the first equation given. Now, distance is found by integrating V. So that's going to be 8t square upon 2 minus 2. I'm integrating this. Minus 2t cube upon 3. And also we know the limits of time, that's from 0 to 3. So 0 and 3. So S equals 4t square minus 2/3 t cube. And now substitute the limits. First substitute 3 in place of t and then substitute 0 in place of t. When we substitute 0, we just get 0. And for 3, we should get 18. The distance covered in the first 3 seconds is 18 meters. Part 2 is find an expression in terms of t for the displacement of P from O valid for t is greater than 0. Okay. Now we integrate the second equation of V for which time is greater than 3. So let's integrate that. (54) t power minus 2. This is what we have to integrate. So it's going to be 54 t power minus 2 plus 1 over minus 2 plus 1. And we don't know the limits this time. We know it starts from 3, but it says valid for t is greater than 3. So what's going to be the upper limit? We don't know. You may substitute t though. इससे भी चल जाएगा. 3 to t. Let's see if we get the answer. Okay. So now this becomes 54 t power minus 1 upon minus 1. And then the limits are 3 to t. Now this is giving me s equals minus 54 upon t. And the limits are t and 3. So s equals minus 54 t minus 54 upon 3. So s equals minus 54 upon t plus 1 and then 18. So s is equals to minus 54 upon t plus 18 is the expression for the displacement for time greater than 3. अच्छा नहीं, इसका आंसर 36 आ रहा है. So that means ऐसे नहीं कर सकते. It's plus 36.
Why am I not getting plus 36? Just a second. Valid for t is greater than 3. So that means that we cannot use a variable here. So let's not do that. यहाँ पे वेरिएबल नहीं यूज होगा लिमिट्स में. So let's use plus c instead. So यहाँ पे आ गया प्लस सी. ठीक है, लिमिट्स नहीं यूज करे. लेट मी जस्ट चेक इफ दैट गिव्स द राइट आंसर. Okay, so I'm using plus c here, plus c here, and plus c here. Why am I doing that? Because I don't have the upper limit of t. I know the lower limit of t, which is 3, but I don't have the upper limit of t. Acha. Now, to find c, I needed t and its corresponding s. We know that either time for this set of equation v is equals to 54 over t square, time has to be greater than 3. बट हमें पता है पिछले पार्ट से कि जब टाइम 3 है, ये देखो यहाँ पे टाइम 3 है, हमने टाइम 3 यूज किया था और हमारा डिस्टेंस 18 आ गया. So when time is 3, the distance is 18. So use that. T is equals to 3, S is equals to 18. We know this from part 1. So S की जगह लिख लिया 18 और 54 की जगह लिख लिया, आई मीन T की जगह लिख लिया 3 plus C. So we get 18 is equals to minus 18 plus C. So C is equals to 36. So now the equation becomes S is equals to minus 54 upon T plus 36. That's the correct answer. So that means when we don't know the lower and upper limit both for T, we're going to use the plus C method. Part 3, find the value of V when the displacement of P from O is 27. Okay. Displacement of P from O is 27. So we will have to integrate the V again. Displacement is integration of V dt. हमने पहले किया था पार्ट 1 में ये, और हमने देखा था जब टाइम 3 है तो डिस्प्लेसमेंट 18 है. Now we have to find that t for which the displacement is 27. So that means वो इधर हो रहा है. जब t is greater than 3, वहां पे displacement 27 हो रही है. Because before that, the displacement goes till 18, not beyond that. So फिर now we have to integrate the other equation, which is 54 t power minus 2. And see के कौन सी value of t पे displacement 27 है. Okay, let's do that. So S is equals to 54 t minus 2 plus, I think we did that already. हाँ, ये भी किया है और हमारे पास आंसर आया है S का minus 54 over t plus 36. We're just going to use that. Why am I doing it all over again? Okay, so we know that S came out to be minus 54 upon t plus 36. Okay. Find the value of V when this displacement is 27. तो पहले इधर 27 लिख लेते हैं. Is equals to minus 54 upon t plus 36. So subtract 36 from 27. 27 minus 36 is minus 9. Is equals to minus 54 upon t.
यहाँ आ गया -54/-9 which is 6. So 6 seconds पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 27. Now you have to find the value of v at this time. So v हमारा था 54/t². So we're going to use v is equals to 54/6², which should be the answer. 1.5 meters per second. That's the answer for part 3. Any questions? Mm. Okay. I hope you guys remember the flow chart I made on the first lesson. In the first lesson वो कुछ ऐसा था कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, s होता है या x होता है, फिर आ गई स्पीड और फिर आ गई एक्सेलरेशन. तो इसको डेरिवेट करते हैं ds/dt, उससे v आ जाता है. और इसको डेरिवेट करते हैं dv/dt, तो a आ जाता है. सो v जो होता है दैट इज इक्वल्स टू ds/dt, और a जो होता है दैट इज dv/dt. और जब ऑपोजिट चाह रहे होते हैं, हमें v चाहिए होता है, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है a को, तो v आता है. सो इफ यू वांट v यू हैव टू इंटीग्रेट t, और फिर यहाँ से भी इंटीग्रेट करना होगा v को टू गेट s. The velocity of particle t seconds after it starts from rest is v, where v is equals to this. Find initial acceleration of this particle. Initial acceleration के लिए हमें acceleration का expression चाहिए पहले तो. It's going to be a equals dv/dt. So a equals 1.25 minus 0.001 t. डेरिवेट कर लिया इस इक्वेशन को. अच्छा, ये गलत किया है. व्हेन यू मल्टीप्लाई टू यू गेट 0.01 टी. ओके. अब इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड करनी है. इनिशियल एक्सेलरेशन का मतलब है एट द स्टार्ट, और तब टी 0 होता है. फॉर इनिशियल एक्सेलरेशन टाइम इज इक्वल्स टू 0. सो ए आ गया 1.25 meters per second square. That's the initial acceleration. Part 2, the displacement of the particle from its starting point at the instant when the acceleration is this. Okay. So at the instant when the acceleration is 0.05, तो पहले acceleration का दोबारा से equation use करते हैं. ये है, this is the equation for acceleration. हमने पिछले पार्ट में निकाल ली थी. अब इस acceleration को 0.05 के इक्वल पुट करते हैं और देखते हैं कि टाइम क्या आता है. सो 0.01 t इधर आ गया, और 1.25 माइनस 0.05. 120.
t इज इक्वल्स टू 120 सेकेंड्स पे एक्सेलरेशन 0.05 हो जाती है, बट उन्होंने पूछा है डिस्प्लेसमेंट एट दिस इंस्टेंट। तो हमें एस की वैल्यू फाइंड करनी है और उसमें टी 120 यूज करना है। सो एस कैसे आता है, वी से इंटीग्रेट करने से आता है। So to find S, we integrate 1.25t minus 0.005 t square. So S would be equals to 1.25 t square upon 2 minus 0.005 t cube upon 3, और मैं प्लस सी करूँ। सो अब सी फाइंड करना है। सो उसके लिए मुझे एक टी की वैल्यू चाहिए और एस की वैल्यू चाहिए। तो आई नो दैट एट द स्टार्ट ऑफ द experiment t is 0 and so is the displacement. So t is equals to 0, s is equals to 0. So when you substitute that in the above equation तो c भी 0 आ गया। So s की equation बन गई 1.25 upon 2t square minus 0.005 upon 3t cube। और अब इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दें t इज इक्वल्स टू 120, उससे ऐसा आ जाएगा which gives you 6120। S is 6120 meters। Man, why didn't you just put the limits of 120 and वो 0? भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। That will give you the same answer। I was just a little skeptical after the last question that did not work। वैसे उसमें मैंने 0 to t यूज किया था, so that was different। So this would definitely work। आप ये भी कर सकते हो instead, if you don't want to use the plus c method, हम इधर टाइम 0 से लेकर what was the time 120 कर सकते हैं। तो जब डेफिनेट इंटीग्रल होता है, मतलब कि जब इंटीग्रेशन की लिमिट्स होती हैं, तो हमें प्लस सी नहीं करना पड़ता। तो that would have worked as well। ओके, अगला क्वेश्चन। ओके, a man walks in a straight line from A to B with the constant acceleration। अच्छा, अब acceleration constant है और straight line है, so that means इसको speed distance वो सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन के चैप्टर से हो जाएगा। We can only apply the 5 equations of motion that we learned in the very first chapter when two conditions are being satisfied। एक तो जो movement है या motion है, it's a straight line motion, it cannot be on a curved line। तब, और जब acceleration constant हो, तब। So this is, I'm pretty sure, a question on equations of motion। Let's see. His speed is, at A is 1.8 and his speed as B is 2.2. Find the time taken for the man to walk from A to B। So yes, it's exactly a question on equation of motion। A given as 0.004 meters per second square। U given है 1.8 meters per second। V गिवन है 2.2 मीटर्स पर सेकेंड। तो अब हमें फाइंड करना है T। सो वी कैन यूज V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। 2.2 equals 1.8 प्लस 0.004 T। सो इसको सब्ट्रैक्ट और फिर डिवाइड करो तो T आ जाता है 100 seconds। And now it's also asking for the distance AB। So अब S चाहिए, तो I'm going to use V square equals U square plus 2AS।
So it's 2.2 square equals 1.8 square plus 2, 0.004 and S is what we have to find. Okay, this gives S equals 200 meters. This is 0.004. Okay, part one is done. It was simply equations of motion. Part two, a woman cyclist travels from A at the same instant as the man. She starts from rest and travels in a straight line to B and reaches B at the same instant as the man. Chaji. So the man reaches in 100 seconds. So this woman also reaches in 100 seconds. She starts, acha, फिर as time at time t seconds after leaving A, the cyclist speed is uh, k times 200 t minus t square, where k is a constant. Find the value of k. अच्छा अब उस हमें speed की equation given है for the woman cyclist. V equals k times 200t minus t square. She starts from rest and travels in a straight line to B, reaching B at the same instant as the man. Okay. So she's starting from rest and then she reaches the point B at the same instant. अच्छा और A B का हमें distance पता है, that is 200 meters. So we know that it's the same distance from for the woman as well. So her distance is 200 meters as well. ओके तो अब हमने के फाइंड करना है. सो हम अगर इसको इंटीग्रेट करके एस का एक्सप्रेशन निकाल दें और एस की जगह पे 200 डालें तो वी शुड बी एबल टू फाइंड टी. सो लेट्स डू दैट. आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट दिस क्योंकि मैंने ये वैल्यू यूज करनी है एस इज इक्वल्स टू 200. तो अब मुझे एक्स का एक्सप्रेशन चाहिए. सो लेट्स गेट दैट एस का एक्सप्रेशन. सो एस इज integration of v. So s will be integrate k को मैं बाहर ही रख रही हूँ 200t minus t square dt. So it's going to be k is still outside 200t square upon 2 minus t cube upon 3 और साथ आ गया प्लस c. ओके अब c की वैल्यू चाहिए. वो कैसे आएगी? uh, we know that the distance of 200 meters is covered in 100 seconds. So let's use that from part one. So S is equals to 200 seconds when T is equals to 100 seconds. Sorry, S meters में होगा. So this should give us the value of, this should give us one equation. अब देखते हैं क्या आता है इससे. 200 equals K और यहाँ आ जाएगा 200 into 100 square upon 2 minus 200 cube, sorry 100 cube upon 3 और plus c. इनफैक्ट c को तो हमें खत्म कर देना चाहिए था शुरू में ही. यहाँ पे when at the start t will be 0. When the woman starts her cycling, t is 0.
और डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो जीरो। तो सी तो खत्म हो गया, इधर से सी जीरो आ जाएगा। इफ यू सब्स्टिट्यूट जीरो इन प्लेस ऑफ एस एंड जीरो इन प्लेस ऑफ टी, तो सी भी जीरो हो जाएगा, तो सी की अब जरूरत नहीं है, देयर इज नो सी इन दिस इक्वेशन। ओके, तो अब I should be able to get a from k from here. So we have 200 here equals k, और यहाँ क्या बनेगा, 200 into 100 squared upon 2 minus 100 cube, 100 cube upon 3. I'm getting a big number, 2 with 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros and upon 3. Now I'm going to divide this with 200. So I'm getting 3 into 10 power minus 4, which is the correct value of k. So this is what we get for k. Okay, that's just the first part. K आ गया, then it says find the cyclist speed at B. So अब ये हम कर लेते हैं, ये हमें स्पीड का एक्सप्रेशन पता है, हमें के भी पता चल गया, और हमें टाइम ऑलरेडी पता है, टाइम 100 सेकेंड्स ही लगेंगे, क्योंकि उसने कहा है, पार्ट टू में कहा है कि द वुमन रीचेस बी एट द सेम इंस्टेंट एज द मैन। सो वो भी 100 सेकेंड्स पे रीच करेगी, सो वी भी आ जाएगा। सो वी वुड बी, replace k with this value of k of it, 200 into time is 100 seconds minus 100 squared। इससे v आ जाता है 3 meters per second। नेक्स्ट इज स्केच और यूज। हम्म। मैं नीचे कौन सी इक्वेशन थी जिसमें हमने ये ये देखो ना पावर v, डाले? ये जो क्वेश्चन में गिवन थी, ये रही, पार्ट टू के स्टार्ट में गिवन थी, जो वुमेन के लिए। पार्ट थ्री, sketch using the same axis the velocity time graph for the man and the woman's motion from A to B. Okay. Excuse me. So velocity time graph बनाना है. So we need velocity on the y-axis, time on the x-axis. So you should properly label that as time in seconds and his velocity in meters per second. For the man, उसकी initial speed 1.8 थी. Let's look at this. Like उसकी initial speed 1.8 थी, और उसकी फाइनल स्पीड 2.2 थी, और ये 100 सेकेंड्स में उसका ये चेंज आया। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इनिशियली द स्पीड फॉर द मैन इज गोइंग टू बी 1.8, एंड आफ्टर 100 सेकेंड्स, या 100 बना लेते, द स्पीड बिकम्स 2.2। लेट्स से यहाँ पे 2.2। सो you get a graph like this for the man. So it's just going to be a straight line graph. For the woman, हमें पता है कि वो रेस्ट से स्टार्ट करती है, तो उसकी तो इनिशियल स्पीड जीरो होगी। सो यहाँ से स्टार्ट करेगी, जब टाइम जीरो है तो उसकी स्पीड जीरो है। फिर हमें पता है कि वो कवर करती है 100 सेकेंड्स में यही डिस्टेंस, और उसकी फाइनल स्पीड ये देखो 3 निकाली थी हमने। तो फिर टाइम 100 पे उसकी स्पीड होगी 3। So let's say 3 is somewhere over here. Scale drawing ये होनी चाहिए, तो 1 रफली यहाँ पे।
1.5 से डबल। अच्छा, मैंने स्केल इतना अच्छा नहीं चूज किया, इट्स नॉट मेकिंग मच सेंस। लेट मी चूज। चलो अभी मैं बस अंदाजे से कर रही हूँ, बट देखो यहाँ 1.8 डिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी 1.8 होना चाहिए, यहाँ पे कम है तकरीबन। क्योंकि अगर मैंने इक्वल मार्किंग्स की हैं देन आई एम गोइंग टू फिक्स दैट। तो आई नीड 3 मार्किंग्स। आई नीड 3 तक जाना है, सो लेट्स से ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, यहाँ पे 3 है। सो फॉर द वुमन एक यहाँ पे आ गया 0.0, पे, और ये एक आ गया 100, 3 पे। एंड फॉर द मैन पहला था 1.8, तो यहाँ पे कहीं 1.5 के ऊपर, तो बल्कि यहाँ पे समवेयर ओवर है। और अगला था 2.2, तो यहाँ पे कहीं। सो हेयर एंड 100 पे 2.2, तो ये बेहतर ग्राफ है, इट्स अ प्रॉपर स्केल ड्राइंग। ओके। अच्छा, फॉर द वुमन वी आर गेटिंग अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फॉर वी। देखो v इज k ब्रैकेट 200t माइनस टी स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। v इज इक्वल्स टू k, क्या था, 200t माइनस टी स्क्वायर। सो इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यू शेप ग्राफ होगा। बट क्योंकि इट्स नेगेटिव टी स्क्वायर, तो फिर अपसाइड डाउन यूज का ग्राफ होना चाहिए ऐसा। सो नाउ यू जॉइन दिस विद द कर्व, इस तरह की इक्वेशन बनेगी, इस तरह का ग्राफ बनेगा। बिकॉज द जर्नी फॉर द वुमन ग्राफिकली इज एन अपसाइड डाउन यू, एन इन्वर्टेड पैराबोला, क्योंकि इसकी इक्वेशन नेगेटिव टी स्क्वायर की है। So this is what the graph will look like for the man and the woman's journey. Okay. That's all from mechanics. अब अगर आपके पेपर के प्रॉब्लम है तो प्लीज बताओ।